Hello students, how are you all? Okay, today we are going to read the rest part of the Standing Up for Yourself, the third and fourth unit. Okay, before going to the third and fourth unit, let us summarize first and second unit. Okay, what happens in the first unit? In the first unit, the writer is talking about himself and about his personal life. In 1941, he was living in a flat in Moscow Street, and his father and mother, or the parents, they were divorced. His father is staying with his new wife and children. His mother is working at the front, and after that he is talking about that his education left to the street. He never learned any kind of manners, behaviors, nothing. What he learned, it is only from the street. And after that, in the second unit, he is talking about a boy, a 16-year-old boy whose name is Red, and he thinks that he is the ruler of that street. He always walks masterfully up and down in the street. And after that, what happens? A facial description is there, how he looks like, how Red looks like, and he talks about two or three lieutenants of Red who always begs money to everyone, because Red never fears anyone or anything. And he is saying that, so like all, I also always afraid of Red, because I know that Red always keeps a knuckle duster in his pocket. Okay, fine. Let us move to the third unit. In the third unit, if you have book, follow the book. Okay. I wanted to conquer my fear of Red. So, see, I now have a kind of strange desire. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡିଜାୟାର, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଯାଇଛି. କ'ଣ ସେ ଇଚ୍ଛାଟି ମୋର? ଦେଖ, now I wanted to conquer my desire, so I wrote a poem about him. ତା ବିଷୟରେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ. ଫାଇନ୍, ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଫାଷ୍ଟ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଇନ୍ verse. ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, for the first time, and it is the first piece of journalism in verse. ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭର୍ସ ଫର୍ମରେ ବା କବିତା ଫର୍ମରେ ମୁଁ ଏଇ ମୋର ଭୟଟିକୁ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ବା ରେଡ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି. ବାଇ ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ, ଯେବେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ତାର ଠିକ୍ ପରଦିନ, ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍? ଦ ହୋଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନ୍ୟୁ ଇଟ୍ ବାଇ ହାର୍ଟ and exalted with triumphant hatred. So ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା? ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ kind of all they have a kind of satisfaction, they have and they have a joy, they have a excitement, because no one is able to express the fear of Red in front of anyone or in front of any journalism like press or media, nothing. But the first time I dared to do that kind of thing. So everyone is happy now. But one morning on my way to school, किंतु दिने कौन हेची, मु स्कूल जाऊची, स्कूल जीवा रास्तारे, I suddenly came upon Red. हठात किनी मो सामना को किए पळी आसिला? Red पळी आसिला. And his lieutenants, तार जो केते जन फॉलोअर्स आउ Red, माने हठात किनी मो सामना को पळी आसिले. आउ कोन कले? His eyes seemed to bore through. आउ मते एमती से गभीर चाहाणी रे चाहूची किए एई Red. आउ कोन कहूची? द पोएट. ओहो, अच्छा तमे सेई पोएट ताहले नाही कि? He drawled. धीरे धीरे कौन कला सी? To say something, drawled means to say something slowly with anger. आमे धीर सुस्थ भाव रे जणो कहिबा, बट सेटा हम राग देखौथबो, that is drawled. So ये बर्तन कुछ the poet, you are the poet, right? Fine. Smiling crookedly, टिके हसी हसी की कहूची, अच्छा 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 तमे से पोएट ताहले नाही कि? अच्छा, so your write verses, जो कविताटी लिखिछ तार पद को पद छिडुची तो? ओके, डू दे राइम? जो कविता तमे लिखिछ से राइम करूची परस्पर सहित, पद को पद छिडुची?
जो लिखिच कविताटी दैट मीन्स नाउ ही इज थ्रेटनिंग टू the poet or the writer, or he is just criticizing the writer. Fine, what happens then? Red hand darted into his pocket. That means entered. वर्तमान ता हाथ पळेला कोठी की ता पॉकेट भीतर ता मान से कोन करिया को चाहूची रे से नकल डस्टर काढिया को चाहूची. Fine. Okay, then what happened? Red hand darted into his pocket and came out armed with his knuckle duster. आउ हाथटी बाहर को बाहरला कोउथिरे नकल डस्टर सहित. इट फ्लाश्ड लाइक लाइटनिंग एंड स्ट्रक माय हेड. हठात के मते गोटे किछि गोटे लाइट देखा गला बेले दिसिला आ मो मुंड रे बाडई गला भलिया लागिला मते. जते बेले तुमको जोर रे मुंड बाडई जाए किछि समय हमको देखा जाए किछि गोटे लाइट फ्लाश हला भलिया देखा जाए हैला. तो से कहउछन किछि समय पई मते जेंति गोटे किछि जिंसो लाइटनिंग हे गला घड़घड़ी मारला भलिया बा जोरे केमती गोटे मते लागिला एंड समवन स्टक माय हेड. के गोटे बोधे मो मुंड को बाडई देला. आफ्टर दैट I fell down streaming with blood and lost consciousness. रक्त बोही चली मु पड़ी गली आउ मोर चेता पळई जाईछि. Fine. This is my first remuneration as a poet. Remuneration माने कोन रे पाउना. माने कर तमे कोठी जॉब करूछ तो मास शेष रे तुमको दरमा मिलुची तो एटा होची तमरो पाउना. पोएट कहउचंती द राइटर इज सेइंग हियर दैट मे बी दिस इज माय फर्स्ट रेमुनरेशन. मु जो कविताटी लिखिली बोध हुए एटा मोर पाउना. ए जो माड़ खाइबाटा एटा बोध हुए मोर प्रथम पाउना. ओके फाइन. देन आई स्पेंट सेवरल डेज इन बेड. बहुत दिन बीती गला मो बिछना रे पड़ी पड़ी बहुत दिन बीती गला. When I went out with my head still bandaged, I again saw red. मुंडो तेबे भी बैंडेज हेई थाए कमी न थाए. जेतेबेले दिने मु बाहर को बाहरी पुणी रेड सहित मोर भेट हो गला. आई स्ट्रगल्ड विथ माई सेल्फ बट लॉस्ट एंड टुक माई हिल्स एट हो. सी से पाखु माड़ खाई रेड पाखु once upon a time or before some days he was beaten by red, and when he is now little bit better, when he came out again he saw red. पुणी थरे से रेड को देखुचंती से पूरा भयभीत हो जाउचंती आ धीरे धीरे पछ को पाद करके पळै आछंती. ओके फाइन. एट होम आई रोल्ड ऑन माय बेड. जेते बेले घरे पहुंची गली माने मते पूरा अस्त व्यस्त लागिला. बिछना रे पड़ी किछि समय गडीली बीटिंग माय पिलो एंड पाउंडिंग. तकिया रे बाड़ई हेली मुंड बाड़ई हेली हाथ गोड़ बाड़ई हेली एंड पाउंडिंग माने पंच मारिबा आउ तकिया को पंच मारली. इट इज द सेम इम्पोर्टेंट फ्यूरी एट माय कावड़ाइस. कोन पई मु मारुतली से पिल्लो को कोन पई मु बाड़ाउतली जे मु जण को देखि कि पछगु पछ मु पाद करी के पळी आछी. दैट काइंड ऑफ थिंग आई लर्न फ्रॉम माय स्ट्रीट. मु कोन सिखितली never I will fear anyone or anything, but today I frightened to red. मु डरी गली आ गोटे कावार्ड भलिया गोटे भीरू भलिया मु पछकु पछ पाद करके पळे आसिली. ओके फाइन. देन I made up my mind to vanquish it at whatever cost. So in that day I concentrate or I aimed that definitely I will just win on red. निश्चित भाव ताठू मु दिने जितबी बोली एई भावना रे आ सेही दिन ही मो माइंड सेट कर देथिली. सेही दिन ही मो माइंड स्ट्रांग कर देथिली. Okay, this is your third unit. Okay, let us move to the fourth unit. What will happen? The end. Okay, I went into training. Bartaman, because I was physically weak from him and I was also weak in age, or I was smaller than red 16 years बयस पिला बोध हुए ताठू किछि वर्षर कम बयसर पिलाटे थिले एंड फिजिकली तांकर सेते स्ट्रेंथ भी नथिला ता सहित लढिबा पई. सो से कोन करले आई वेंट इनटू ट्रेनिंग नवा आरंभ कली. मते ताकू ताठू जितिबार अछि ना विथ पर्ल बार्स एंड वेट्स
ताने जोटी तुम जिम फिम जाओ हेले एटा को कहा जाए। सो आफ्टर एवरी सेशन प्रत्येक दिन हम जिम जाए, जिम सरी गला तापर हम कोन करे, आई वुड फील माय मसल्स दे वर गेटिंग बिगर बट स्लोली। मत प्रत्येक थर जिम जाई सरी फेरला पर मत लागे नहीं मो मसल्स गुडी गुडी के बढ़ुची बट बहुत स्लो रे बढ़ुची, माने सेते जल्दी बढ़ुनी, मत तो जल्दी ताकू हरेबार अछि ना, तो मु सेते जल्दी सेते शक्तिमान हेई पारु नाही। देन आई रिमेम्बर्ड समथिंग आई हैड रीड इन ए बुक अबाउट ए मिराकुलस जापानीज मेथड। हठात कि मोर मन पड़ला गोटे जापानीज मेथड अछि मु जोटा पढ़ी गोटे बुक रे, कौन से मेथड ऑफ रेस्लिंग, रेस्लर्स माने प्राय सेटा फॉलो करंती से बुक टी को, व्हिच गेव एन एडवांटेज टू द वीक ओवर स्ट्रांग। जापानीज मेथड गोटे अच्छी गोटे बुक अच्छी जोटा कि कौन तुम जी वीक अच्छ से तुमको स्ट्रांग बनवाई प्राय तो रेस्लर माने से बुक फॉलो करती। से बुक विषय में गोटे कौटी पढ़ी, नाउ आई रिमेम्बर दैट यस देयर इज ए जापानीज बुक व्हिच मे बी इट विल हेल्प मी। आई एक्सचेंज्ड ए वीक्स राशन कार्ड फॉर ए टेक्स्ट बुक ऑन जिउ-जित्सु। तो मु कौन कली केमिति भाबरे किनी से बहीटी, से बुकटी बहुत दाम, मो पाखरे किनिया को पैसा नहीं, तो ही एक्सचेंज्ड ए वीक्स राशन कार्ड थाए ना हमर, से जणु को तांको राशन दे देले आउ ता बदल रे किछि पैसा नहीं आसले, आ सही पैसा रे से बहीटी किनिले। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक? जिउ-जित्सु। रिमेंबर दिस, मे बी इट विल बी द क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। What is the name of the book Yevgeny Yevtushenko followed? Okay, jiu-jitsu. Fine. Okay. For 3 weeks, 3 सप्ताह, I stayed at home. Then practicing with 2 other boys. आमे जत्ते निजु को शक्तिशाली बनै दउ, जत्ते ट्रिक सिखि जाउ, आमे जत्ते कास प्रैक्टिस न करिवा जानिबा केमती आम स्ट्रेंथ। So what I did, I stayed for 3 weeks, 3 सप्ताह घरे रहिली एंड प्रैक्टिस कली कहा सहित आउ 2 जण पुओंक सहित मु मोर प्रैक्टिस करिवा आरंभ कली। देन व्हाट हैपेंड, देन आई वेंट आउट। तापर वर्तमान मु रेडी, व्हेन आई फील दैट यस आई एम रेडी नाउ टू फाइट विथ रेड सहित वर्तमान फाइट करिया पई रेडी ही जाई छी। सो he came out and after that red was sitting on the lawn in a yard in our yard. गोटे यार्ड अच्छी लॉन टे अच्छी घास गालीचा अच्छी, तापरे माने बसी जंदी के रेड आउ तार लिeutenants माने। ओके, playing bring it at on, bring it on means a kind of game, card game, ताश खेलंती नी like that. Okay, card game. So with his lieutenants, ता followers ता lieutenant मान को सहित बसी कार्ड खेलुची लॉन उपरे। ओके, he was absorbed in the game. गेम खेल रे पूरा मज्जी जाइए से किए रेड। फाइन, फियर वाज स्टिल डीप इन मी, माड़ तो खाई ना मु थरे ताठू, तो भय अच्छी भितरे निश्चित भाव में भय टिके अच्छी। फियर वाज स्टिल डीप इन मी, मो भितरे भय टिके टिके अच्छी तथापि। अर्जिंग मी टू गो बैक, भय जोठी अच्छी से कौन कहूँ नाई रे जानी रे पळे आसे पुणी माड़ खाइबू पळे आसे। सो इट इज अर्जिंग मी टू गो बैक पछू पळे जमा जानी ता पाखकू। सो देन व्हाट हैपेंड, बट आई वेंट अप, मु तो निजको स्ट्रांग करिछि ना, बट आई वेंट अप टू द प्लेयर्स एंड किक्ड एंड स्कैटर्ड द कार्ड्स। आ मु कोन कली, मु गली ता पाखकू जाई कोन कली, जो से माने सब बसी थिले खेलुथिले तांको कार्ड गुडी को गोइठा देली पूरा। आई किक्ड एंड स्कैटर्ड द कार्ड्स, और जो सब खेलुथिले सब तांको से जो कार्ड गुडी को खेलुथिले से सब कोडी विच्छुरित हेकी पड़ी गला, स्कैटर हे जिबा, विच्छुरित हे जिबा हैला, सब एपर सेपट हेकी विच्छुरित हेकी पड़ी गला। देन व्हाट हैपेंड, सी रेड लुक्ड अप, रेड बर्तन रागी गला, कोन ये माड़ थरे खाई के जाईची पुणी आसी कोन गोइठा मारुची। So what happened? Red looked up. Red बर्तमान टिके अनौची, surprised at my impudence after my recent flight. So देखिला रेड कोची कोन ये हठात किनी बर्तमान एमिति माड़ खाई सोईथिला घरे एते दिन, उठी की हठात किनी आसी की पुणी एठी हमको गोइठा मारुची कोची कोन। से किछि समय पई अनै के रहिला। He got up slowly, धीरे धीरे उठिला। You are looking for more, आ ताको पचारुची रेड किरे तते कौन से दिन हेनी ठीक भाव में आउ किछि माड़ दरकार तते, किए पचारुची रे, रेड पचारुची राइटर को कौन पचारुची। ही गट अप स्लोली,
धीरे धीरे उठिला. You are looking for more, he asked menacingly. very style रे पचारला तते आउ टिके दरकार होउची बोधे आउ टिके माड़ दरकार होउची बोधे तते. Okay, fine. What happened then? As before, his hand dived into his pocket for the knuckle duster. पूर्व से कौन करथिला? He dived his hand to the pocket for the knuckle duster. एबे भी से या कला. बर्तमान ता पॉकेट रे से हाथ पुराउची कोन पई? सेई knuckle duster टी बाहर करिवो. But I made quick jabbing movement and red hallowing with pain rolled on the ground. मु जानि छी निश्चित भाव रे से जाउची हाथ पुराउची पॉकेट रे कोन करिवो? से नकल डस्टर टी बाहर करिवो. आई क्विक जैबिंग जोर से जाके जापी की धरी देली ता हाथ को. कोन को पर्यंत जो पर्यंत से माने ताको कष्ट न होईची पूरा ताको कष्ट हैला से तळे ग्राउंड रे पड़ी की गड़ीबा आरंभ कला. तापरे मु ताको छाडीली. ओके फाइन. देन bewildered he got up. आउरी रागी वाला सी कौन सी मो हाथ धरी दउची एते साहस तर हे गलानी. सो bewildered आउरी भयंकर हे गला सी. तापरे उठिला पुणी एंड देन कोन कला सी देखो. bewildered he got up and came at me swinging his head furiously from side to side like a maddened bull. द पागल संठ भलिया मुंड एपट सेपट बुले 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 से आसुची कोन पई? टू बीट मी मत बाड़े पे से बता पागल षंड भाया एंड आउ टे भयंकर हो जाइए आउ टे जंगली टाइप से आसला मो पाक आसी कौन करुची देख व्हेन आई कॉट हिज रिस्ट एंड स्क्वीज्ड स्लोली मु को छाड़ीबा लोक मु रिस्ट को धरीदेली रिस्ट मीन्स दिस पार्ट ओके सो द रिस्ट को स्क्वीज करके पूरा धरीदेली एंड देन स्लोली धीरे 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 स्क्वीज कली त रिस्ट को एज आई हैड रीड इन द बुक मो बुक रे पढ़ी केमिति भाव रे ताकू धरा जीवो मु से बुक रे जूजिस टू बुक रे मु पढ़ी जेमति भाव रे पढ़ीतिली सेमति भाव रे ता हाथ को बर्तमान स्क्वीज कर देली अंटिल द नकल डस्टर ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज लिप्स फिंगर नकल डस्टर ता हैंड भितर अच्छी ना ता अंगूठी भितर अच्छी फिंगर्स भितर तो ता हाथ को एमती स्क्वीज करके पूरा धरिली एमती जो पर्यंत ता हाथटा से नकल डस्टर खसी न पड़ी से पर्यंत ता हाथ को स्क्वीज करके पूरा धरिली देन व्हाट हैपेंड नर्सिंग हिज हैंड रेड फेल डाउन अगेन हाथ आउसी 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 बर्तमान कौन गला पुणी थरे से तले पड़ीगला आउ से तले पड़िकी रहिला ही वाज सोबिंग एंड सिमरिंग द टीयर्स ओवर हिज पॉक मार्क्ड फेस विथ हिज ग्रबी फिस्ट आ से कौन करूची बर्तमान टिके लो वॉइस रे कांदी कांदी आ तार से ग्रबी फिस्ट ग्रबी मीन्स डस्टी महिला हाथ रे ता से महिला हाथ रे लुह पुछि पकोउची आ तार से पॉक मार्क फेस रे जो लुह बही जाउची गात 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 मुह रे जो आखिरु तार लुह बही जाउची से कौन करची ता से महिला महिला हाथ रे लुह पुछुची कोठी से ग्राउंड रे पड़िकी fine that day Red ceased to be the monarch of our state आउ से दिन ठारू मोनार्क मीन्स द किंग द एम्परर आउ सेबे ठारू से जो आम स्ट्रीट रो थिला मोनार्क द किंग फ्रॉम दैट डे ही वाज नो मोर द मोनार्क ऑफ आवर स्ट्रीट आउ से आम रास्तार बा से गली रो आउ रजा हैला नाही बा रजा भली आउ व्यवहार कला नाही फाइन ओके देन द मोरालिटी एंड फ्रॉम दैट डे ऑन आई न्यू फॉर सर्टेन आउ से दिन ठू मु सिखिली व्हाट आई लर्न दैट वन नीड नॉट फियर द स्ट्रांग और से दिन मु रियलाइज करली यस वी शुड नॉट बी फियर टू द स्ट्रॉन्गर पर्सन टू द स्ट्रॉन्ग हु इज इन फ्रंट ऑफ अस मे बी ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू बट यू डोंट हैव टू फियर तुमको डरिबार नहीं से तुमठु शक्तिशाली हेई पारे बिकॉज द राइटर वाज वीक एंड रेड वाज वेरी स्ट्रांग स्टिल से ताको हराई दी So that's why he is saying that I knew for certain that one need not fear the strong. All one needs तो कौन दरकार हम पाई is to know the way to beat them. हमें केवल इतनी जानिबा दरकार को रास्ता रे हमें ताको हरई परिबा. What is the actual way? हमें जदि डरी जीवा तार weakness तो हमें जानी परिबानी ना front लोकर. So we have to know the weakness of the person who is in front of me, who is stronger than me. एटा मते बुझिबा को पड़िबो तेबे जाई म ताको हरई पारिबी. And then what is he saying that
For every strong man, there is a special juice. प्रत्येकटी सफल व्यक्ति पाई निश्चित भाव में गोटे जूजिस्टू बुक अच्छी हियर जूजिस्टू इज ए symbolic मीनिंग हियर व्हाट इज दैट कॉन्फिडेंस समस्त जीवन रे निश्चित गोटे समस्त गोटे सफल मनीष पछरे निश्चित भाव में गोटे जूजिस्टू अच्छी गोटे कॉन्फिडेंस अच्छी when we lost the confidence we can't win on anyone कहा ऊपर भी हमें जीति पारिबानी जदि कॉन्फिडेंस लॉस करूछु सो कॉन्फिडेंस इज अ जूजिस्टू फॉर एवरीवन प्रत्येक मनीष पई गोटे जूजिस्टू अछि दैट इज आवर कॉन्फिडेंस आम कॉन्फिडेंस फाइन देन what I also learned on this occasion was that आउ ए occasion रु बा ए परिस्थिति रु आउ गोटे जिनस मु शिखिली कौन सेटा टू बी ए पोएट प्रथम जिनस मु प्रथम थर ता विषय गोटे पोएम लिखिली जोथि पई ता रेम्युनरेशन मु पाइली कौन आज माड़ खाइली बट गोटे पोएट हवा पई एई प्रकार स्ट्रगल भी करिया को पड़े जदि तमे कहा विषय किछि लेखुछ कहा को इंगित करी किछि लेखुछ यू हैव टू फेस दैट बट यू नेवर फियर अबाउट दैट केबे भी हमें डरिबानी जो रास्ता को हम ओल्हेइछु सेठी बहुत प्रकार जिनस हम फेस करिया हबो जदि हमें डरी जिबा ताहले से रास्ता हमर जीवार नथिला जो रास्ता रे भी हमें जाउचे वी हैव टू फेस द थिंग्स वी हैव टू फेस द ऑब्स्टैकल्स वी हैव टू फेस द हम्पर्स then we will be success तबे जाय हम सक्सेस हबा and then I had not only to write poems but to know how to stand up for them मु सही दिन केवल गोटे पोएट हवा सिखि नथिली जो प्रोफेशन रे मु पसिछि ता पई निजको मु केमति स्ट्रांग करी कि छिडा करबी when there is no one for me जोठी मो पई केही नथिले सेते बेले मु केमिति मो निज पई निजको ठिया करबी ए जिंस भी मु सिखिली देखो तमे जते गोटे एकुटिया रास्ता रे कोठी जाउचो no one is there and you fall down from your bike or from your cycle whatever but no one is there to help you के भी नहांती तुमको सहाय्य करिवा को निजको निजे निजे तमे तमरो सहारा बनिबो ना निजे निजे उठिबो साइकिल टिक उठेबो बा गाड़ी टिक उठेबो तापर से घर को आसीबो so always think like this there is no one to help me I am the great support of mine मु मो निजर गोटे great support we should always think like this then we can achieve our goal or we will be successful in life okay fine this is your total prose I think you understood if not watch it again and again thank you have a nice day